Students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 4th of October 2021, Monday. Inspiration of the day is if you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. MPC may opt out for cut in liquidity, no rate hike. Business Standard has conducted one policy poll of 14 leading economists and bond market participants. And as per this survey and as per the finding of this survey, economists and bond market participants do not expect any change into the RBI instance. It means RBI will continue its accommodative policy. RBI will not go for any sort of policy rate hike. However, as per this survey, RBI may consider few measures for the removal of excess liquidity that is prevailing in the market in order to control the inflation. तो 8 अक्टूबर को जो आरबीआई की एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होने वाली है उसमें इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आरबीआई अपना एकोमोडेटिव इंस्टांस ही कंटिन्यू करे. इट मीन्स पॉलिसी रेट में या रेपो रेट में कोई भी चेंज आने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है. हालांकि एज पर दीज एक्सपर्ट आरबीआई कुछ मेजर्स ले सकती है लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, बट दे आर प्रोनोकॉनिस्ट अबाउट अदर पॉलिसी आउटकम्स वैरीड वाइडली. जितना भी सर्वे हुआ उसमें जो 14 लीडिंग इकोनॉमिस्ट और बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, दे आर एक्चुअली यूनानिमस ऑन वन पर्टिकुलर इंस्टांस, दैट इज आरबीआई इज नॉट गोइंग टू चेंज द रेपो रेट और policy rate. However, their prognosis about the policy outcome is varied. It means they have different opinion on the point of view that which measure RBI will take in order to remove the excess liquidity. And if we talk about the current repo rate and current reverse repo rate, that is 4% and 3.3% respectively. And these rates are actually record low in the history of RBI. But still RBI does not seems to be in the mood of rate hike as per this survey conducted by Business Standard. अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें, ग्लोबल बैंक्स की बात करें, तो जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं जैसे कि यूएस जो और अदर इकोनॉमीज़ हैं उनके सेंट्रल बैंक्स जो हैं, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, वैसे यूएस का सेंट्रल बैंक यूएस फेडरल रिजर्व है. तो जितनी भी जो बड़े इकोनॉमीज़ हैं उनके सेंट्रल बैंक्स हैं, दे हैव एक्चुअली इंडिकेटेड टू इंक्रीज द रेट पॉलिसी रेट in order to control the excess liquidity as well as inflation. A number of times we have discussed about the news of US Federal Reserve and their instance for bond purchase and interest rate or rate hike. तो रिसेंटली अगर हम यूएस फेडरल रिजर्व की बात करें तो यूएस फेडरल रिजर्व ने इंडिकेशन दिए दैट दे आर गोइंग टू हाइक द पॉलिसी रेट्स फ्रॉम नवंबर, एंड फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स द बैंक विल ऑल्सो रिड्यूस इट्स बॉन्ड परचेज इन ऑर्डर टू कंट्रोल द लिक्विडिटी इन द मार्केट. बट आरबीआई इज अनलाइकली टू बी हरी इन टर्म्स ऑफ रेट कट बिकॉज नाउ दीज डेज द मेजर फोकस ऑफ आरबीआई इज टू रिकवर द इकोनॉमी, इज टू इंश्योर द प्रॉपर इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर पैंडमिक. इसके अलावा आरबीआई के पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल है. रिसेंटली अगर हम देखें तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो थोड़ा सा डाउन हुआ, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5.3, और पिछले कुछ महीनों से हमेशा वो 6 का पॉइंट क्रॉस कर रहा था. एंड वी नो द बेसिक मैंडेट फॉर आरबीआई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन और द रेंज एक्सेप्टेबल रेंज फॉर इन्फ्लेशन इज +-2 तो यानी 2 से 6 के बीच आरबीआई की रेंज थी कि इन्फ्लेशन जो है सीपीआई इन्फ्लेशन बेसिकली 2 से नीचे नहीं और 6 से ऊपर नहीं होना चाहिए. और पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखें रिसेंट वाला अगर हम मंथ छोड़ दें, रिसेंट सीपीआई को छोड़ दें, रिसेंट डेटा को छोड़ दें, तो उससे पहले जो इन्फ्लेशन थी सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दैट वाज कंटिन्यूअसली अबव देन 6. सो एट दैट टाइम इकोनॉमिस्ट वर सेइंग दैट देयर इज अ टाइम दैट आरबीआई शुड रिमूव द एक्सेस लिक्विडिटी एंड शुड ट्राई टू इंक्रीज द रेट हाइक और द पॉलिसी रेट हाइक. बट रिसेंटली CPI has come down to 5.3, and at that time we have also discussed that now this particular inflation rate or CPI rate give the RBI an opportunity
and the margin and the window to continue with its accommodative instance. And as per the current survey, RBI is going to follow the very same posture. And as per the few economists, this inflation is further going to fall and is expected to fall further in upcoming months. So definitely RBI के पास आराम से एक margin available है कि RBI इतनी inflation पर liquidity ensure कर सकती है, economic growth को support कर सकती है. So this is the point of view of different expert or the economists participated into survey, and this is the opinion that has been listed into a table. So if you want to see which economist has which opinion on RBI policy stance, you can have. So just like Siddharth Sanyal says that no rush policy, RBI will continue with the accommodative stance. So just like Mr. Siddharth, you can see other economist has or bond market participant has also given their point of view on upcoming MPC. Now let us see article number 2 that is given on page number 3. 4 platforms get IFSCA license for factoring business at Gift City. So the International Financial Services Center Authority, in short, we call it IFSCA. IFSCA. So sole regulator of Gift City based International Financial Services Center has issued license to whom? To 4 trading financial platform to tap approximately 2,724 billion euro international factoring business. Now, in order to understand this news, we must understand the factoring business. What is actually factoring business? However, in number of news discussion, we have discussed about the factoring business. But yes, in order to understand this news, you have to know what is factoring business and why this particular approval has been given and what this approval bring to Gift City. I hope we all know what is Gift City. GIFT basically stands for Gujarat International Financial Tech City. That is, in short, we call GIFT City. It is a business district currently being operated in the state of Gujarat. And this particular city or GIFT City or special economic zone is basically promoted by state of government. For what? For greenfield investment. It will include commercial as well as the residential complexes. However, the basic focus is on commercial and international investment on overseas investments. And this particular project was conceptualized in 2007. However, the actual groundwork of the project, originally a joint venture between the Gujarat Urban Development Company Limited and Infrastructure Leasing Financial Services Limited, IL&FS. If you remember, whenever we were discussing about the IL&FS case, we have also discussed about this Gift City, and I told you number of projects that has been sponsored or funded by IL&FS, and into that Gift City is one of the very important project that is funded by IL&FS. So this is all about Gift City. Now comes to the factoring business. Basically, what we do in factoring business? In factoring business, where an entity, it may be any business entity, an entity acquires the receivable of another entity for an amount. So basically, factoring business is a business where an entity acquires the receivables of another entity for an amount, and that particular entity is called as factor. We call them factor in factoring business, and it could be a bank, it could be a registered non-banking financial company, or any company that is registered under Companies Act. And these receivables is a total amount that is owed or yet to be paid by the customers to the assigner for the use of any good or services or any facility that is being sold by another organization or another business entity. So basically, factoring is a financial transaction. So factoring means a financial transaction and a type of debtor finance in which a business entity sells its account receivable to a third party, that called as a factor. This particular third party, whosoever is buying this receivable, will be called as factor.
So if any business is having any sort of receivable, it means that particular business has customer, and that customer has to pay certain amount to this particular business for availing any facility for product or services. This customer own or has to pay certain amount to these business organization, and these business organization has written receivable. So what these business organizations do, they sell these receivable, अकाउंट रिसेबल, कॉल दैम अकाउंट रिसेबल, दैट इज रिटर्न फॉर्म में एक कागज होता है कि हम आपको इतना रुपए आगे आने वाली महीने की इस तारीख को पे करें। कस्टमर ने कोई सर्विस ली और उसने कहा अभी हमारे पास पैसा नहीं है, आई विल पे दिस अमाउंट टू यू फॉर अपकमिंग दिस पर्टिकुलर डेट और दिस पर्टिकुलर मंथ। तो एक रिसीवेबल बैंक पर्टिकुलर बिजनेस ले लेता है। वो अब इस पर्टिकुलर बिजनेस को जिसने रिसीवेबल इशू किए थे कस्टमर को, उसको पैसे की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू मीट आउट देयर एक्सपेंसेस, इन ऑर्डर टू मीट आउट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो क्या करेगा, या तो ये कस्टमर से बोलेगा कि आप ये अपनी रिसीवेबल्स लीजिए और हमको पैसा दीजिए। अगर कस्टमर ने कहा कि नहीं हम तो उसी डेट को देंगे और बिजनेस को ज़रूरत है इमीडिएटली कि उसे फंड की ज़रूरत है, कैश की ज़रूरत है, तो बिजनेस क्या करेंगे, ये रिसीवेबल किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देंगे और वो थर्ड पार्टी क्या कहलाती है, बिजनेस। तो बेसिकली बिजनेस को जिसने रिसीवेबल इशू किए थे उस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की ज़रूरत है और उसके पास रिसीवेबल्स हैं, क्रेडिट कार्ड जिसको हम बोल सकते हैं, उसने वो दे दिया थर्ड पार्टी को कि आप ये रिसीवेबल्स लीजिए और उसके बदले मुझे इतने रुपए, 100 रुपये के रिसीवेबल्स है तो आप मुझे 90 रुपये दे दीजिए, 95 रुपये दे दीजिए और आप ये 100 रुपये कल को इस बिजनेस, इस पर्टिकुलर कस्टमर से रिकवर कर लीजिएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज फैक्टोरिंग बिजनेस। इट मीन्स जो ये अकाउंट रिसीवेबल्स हैं जो कस्टमर ने इशू किए हैं, इनकी ट्रेडिंग हो रही है, इनकी फैक्टोरिंग हो रही है। So basically, factoring is a financial transaction and a type of debtor finance in which business sells its account receivable invoices to a third party called as factor at a discount rate. A business will sometimes factor its receivable assets to meet out its present or immediate cash requirement. तो 100 रुपये के रिसीवेबल्स हैं, फैक्टर को बेच दिया हमने 90 रुपये में या 95 रुपये में और कहा कि आप हमें 90-95 रुपये अभी दे दीजिए, एक महीने बाद आप हमारे कस्टमर से 100 रुपये ले लीजिएगा। डेफिनेटली दस 5 रुपये विल बी द प्रॉफिट ऑफ दिस थर्ड पार्टी और दिस बिजनेस विच इज कॉल्ड एज बिजनेस एंटिटी विच इज कॉल्ड एज फैक्टर. This factor is an intermediary agent that provide cash or financing to a company by purchasing their account receivable. A factor is essentially a funding source that agree to pay the company the value of an invoice less a discount for commission and a fee. And this factor could be any bank, any NBFC or any company that is registered under Company Act for especially for factoring business. So factoring can help companies to improve their short-term cash need by selling their receivable in return for an injection of cash from the factoring company. And this practice, and the practice is also known as factoring, factoring finance or account receivable financing or factoring business. And definitely the terms, condition, rules set by the factor may vary depending on its internal practices. तो इसमें क्या होता है, दोनों ही कंपनीज को फ़ायदा होता है। जो फैक्टर्स है उसको कमीशन मिलता है, फीस मिलती है, जो बिजनेस है उसकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है कैश की, अगर उसको इमीडिएटली कैश की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू मीट आउट एक्सपेंसेस, उसको इमीडिएटली फैक्टर से पैसा मिल जाता है। और कस्टमर जिसको उस पर भी कोई लोड नहीं आता है, उसने अगर एक प्रॉमिस डेट करिए कि हम इस डेट को पेमेंट करेंगे तो थर्ड पार्टी उसे उसी डेट पर पैसा लेती है। तो दिस इज़ लाइक इंश्योरिंग द शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट स्पेशली फॉर MSMEs। और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल भी लाया है फैक्टोरिंग बिजनेस को लेकर के, that is factoring regulation amendment bill 2021. A number of changes has been proposed under this particular regulation or amendment bill in order to basically help the micro, small and medium enterprises sector. And this particular changes or these particular changes has been recently suggested by UK Sinha committee. So you can remember all these facts. This may be the probable question for your upcoming exam. Now let us see the news. So Gift City में 4 ट्रेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म को फैक्टोरिंग बिजनेस करने की परमिशन दे दी गई है। और कितना अमाउंट तक वो फैक्टोरिंग बिजनेस कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2724 बिलियन यूरो का उन्हें अलाउ है कि वो फंड टैप कर सकते हैं। सो डेफिनेटली
एज आई डिस्कस कि फैक्टोरिंग बिजनेस हेल्प करता है बिजनेस की जो इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। 4 ट्रेड फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म को अप्रूव कर दिया गया है इंटरनेशनल फैक्टोरिंग बिजनेस के लिए। ये तो हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल फैक्टोरिंग बिजनेस के लिए उनको अलाउ कर दिया गया है। एंड द सप्लाई चेन फाइनेंस पोटेंशियल इन ग्लोबल ट्रेड इज अप्रॉक्सीमेटली $17 trillion. And all these platforms will use which technology? Blockchain technology for checking the bills that will be submitted by business organization for discounting. And they may be tested and used for the Gift City ventures as well. So this will actually improve the business. This will improve the trade in Gift City, increase the overseas investment, will help to generate the cash, especially for those companies which are operating in Gift City. So कैश लिक्विडिटी सप्लाई और बिजनेस को इम्प्रूव करेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करेगी। हाउएवर दिस इज नॉट मैंडेटरी फॉर IFSCA पॉइंट ऑफ व्यू, but entity coming up at IFSCA are contemplating the use of blockchain. तो बेसिकली अब इंटरनेशनल अगर फैक्टोरिंग बिजनेस हो रहा है तो उसकी सिक्योरिटी भी इंश्योर करने की जरूरत है, ऑथेंटिसिटी इंश्योर करने की जरूरत है कि जो कंपनीज रिसीवेबल सेंड कर रही हैं वो रिसीवेबल ओरिजिनल है कि नहीं है। तो उस सब के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाएगी, जिससे कि जो ये ट्रेडिंग कंपनीज हैं, फैक्टोरिंग बिजनेस की कंपनीज हैं, ये ऑथेंटिसिटी चेक करे किसी भी रिसीवेबल्स की, रिसीट्स की और अकाउंट रिसीवेबल्स की। And these in principle licenses were issued by IFSCA last Friday to start working through sandbox facility before formal business. और जो 4 कंपनियों को RBI का लाइसेंस मिला है ट्रेड प्लेटफॉर्म के लिए, उसमें से 2 कंपनी इंडिया की हैं, एक M1 एक्सचेंज और दूसरी RXIL। तो M1 एक्सचेंज और RXIL जो कि ऑलरेडी RBI से लाइसेंस है, इनको भी परमिशन मिली है गिफ्ट सिटी में फैक्टोरिंग बिजनेस करने की। और जो अदर कंपनीज हैं वो कौन सी हैं? क्रेडेक्स एंड वियाना, विच आर सर्विस प्रोवाइडर फॉर बिल डिस्काउंटिंग एंड रिलेटेड फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय द बैंक्स। And this particular approval by the IFSCA will enable the exporter as well as the importer to avail themselves the trade finance facilities such as export and import factoring. Now export and import factoring can also be done easily, reverse factoring, supply chain finance, and forfeiting the transaction at a competitive term. So in totality, it will increase the ease of doing business, specifically in the gift city. So these are the opportunities that is available to the factoring business in international transaction. तो जो पोटेंशियल है ग्लोबल ट्रेड का, फाइनेंशियल सप्लाई चेन फाइनेंशियल पोटेंशियल ऑफ ग्लोबल ट्रेड इज अप्रॉक्सीमेटली $17 trillion. And now you can imagine the potential for factoring business. $17 trillion का पोटेंशियल का ट्रांजेक्शन हो रहा है और उसमें फैक्टोरिंग बिजनेस कैन हेल्प सो मच। एंड 2020 इंटरनेशनल फैक्टोरिंग बिजनेस साइज इज अप्रॉक्सीमेटली €2.3 to €2.7 trillion, and India's share for domestic factoring is approximately 0.2% of GDP. This is the domestic factoring business. So domestic factoring business यानी जो इंडिया में domestic factoring business होता है वो GDP का केवल 0.2% का होता है, whereas in UK it is 17.3%, Brazil it is 4.1%, China it is 3.2%, Germany 14.5%. So now you can imagine the potential India has in terms of factoring business. Now let us see article number 3 that is given on page number 4. New terms for settling retro tax cases may be unwidely. So this is not the news, this is basically the opinion of few experts, and as per these experts the new terms for settling the retrospective tax cases recently, अगर आपको पता हो तो पार्लियामेंट ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने RBI इनकम टैक्स में, नॉट RBI, इनकम टैक्स में जो प्रोविजन था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का उसको रिमूव कर दिया। और जो कई सारे केसेस चल रहे थे, चाहे वो केयर एनर्जी से रिलेटेड हो, चाहे वो वीडियोकॉन से रिलेटेड हो, जितने भी केसेस थे अब वो सारे वाइंड अप होना शुरू हो गए। तो बेसिकली इंडिया इनकम टैक्स में क्लॉज था कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स इंडिया में अप्लाई किया जा सकता था, अब उस पर्टिकुलर क्लॉज को रिमूव कर दिया गया है। ना गवर्नमेंट इज इन एक्चुअली process to resolve all those retrospective cases, litigations and petitions. Apart from it, government also want to give a positive sentiments or want to develop the positive sentiments
among overseas investors. For what? For India's taxation, favorable taxation system, कि अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो उन पर कोई ऐसा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कभी भी नहीं लगाया जाएगा. बट और उसके तहत कई सारे जो ऑलरेडी केस चल रहे हैं वो भी रिजॉल्व हो रहे हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस. बट एज पर द एक्सपर्ट, द न्यू टर्म्स फॉर सेटलिंग द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केसेस, particularly indemnifying the government, could be cumbersome and time consuming for कंपनीज. तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ठीक है, आपने जितने रेट्रोस्पेक्टिव केस हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए कहा है और उसके लिए कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करी, बट एज पर दीज एक्सपर्ट दीज कंडीशंस आर सो कम्बर्सिव एंड सो टाइम कंज्यूमिंग दैट कंपनीज में स्ट्रगल टू कम अप टू दोज टर्म्स विद स्वीपिंग अंडरटेकिंग्स एंड डिक्लेरेशन फॉर्म्स फ्रॉम बोर्ड एंड अदर shareholders, observed legal and tax expert, and because of this cumbersome process, companies may not properly utilize that opportunity or that facility provided by recent tax reforms. और सबसे बड़ा जो इश्यू वो इंडेमनिटी बॉन्ड का जो फॉर्मेट है उसको प्रोवाइड करने का, कि भाई इंडेमनिटी प्रोवाइड कर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉर एनी डिस्प्यूट, लेकिन वो पर्टिकुलर इंडेमनिटी बॉन्ड का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग वो किसी भी इंडिया के कोर्ट में जुरिडिक्शन में वो फिर से सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन हो सकती है. और इस केस में क्या होगा, जो डिक्लेरेंट है वो बेसिकली अपने होम जुरिडिक्शन को प्रेफर करेगा टू चैलेंज दिस इंडेमनिटी बॉन्ड. सो देयर आर लॉट ऑफ रूल्स और लॉट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन दैट आर सो कम्बर्सिव, सो एम्बिगुअस, सो टाइम कंज्यूमिंग दैट कंपनीज intending to settle is ring fenced by large number of declaration running into very detailed format. तो expert का कहना है, if you really want to resolve all these retrospective cases, kindly make terms condition format so easy so that companies can actually opt for it. और जो indemnify, गवर्नमेंट को जो indemnify करने का जो प्रोसेस है उसको भी थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है एज पर दीज एक्सपर्ट्स. दीज आर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्यू एक्सपर्ट्स, मिस्टर केतन दलाल, फाउंडर ऑफ कैटलिस्ट एडवाइजर, एंड राकेश नांगिया, चेयरमैन ऑफ नांगिया एंडरसन इंडिया. नाउ लेट अस सी few other news clips. NTPC to list 3 arms to mop up rupees 15,000 crore. So state-owned thermal power company, that is NTPC. So NTPC would list on exchange its 3 subsidiary companies. क्यों? Why NTPC is going to list its 3 subsidiaries into exchange? In order to meet out the government stipulated target of rupees 15,000 crore worth of asset monetization. So for asset monetization, 15,000 करोड़ का जो टारगेट एनटीपीसी को दिया गया है उसको अचीव करने के लिए एनटीपीसी is now going to list on exchanges for generating this amount of money through asset monetization. And these 3 companies are Vidyut Vyapar Nigam, in short we call it NVV, and North Eastern Electric Power Corporation, NIPO, in short we call it NIPO, and 1-year-old NTPC Renewable Energy, in short we call it NREL. So these 3 entities are going for listing, and NTPC would also exit its joint venture with steel majors SAIL. So a lot of reforms are being taken by this NTPC in order to have the good value on asset monetization process, and so that it can generate approximately 15,000 crore. That was the target set by government of India for this financial year. Now let us see next clip. Prolonged battle ahead of Z takes Invesco to court. So prolonged legal battle up to the Supreme Court may be in the offering as a corporate battle between the Zeal and the institutional investor Invesco spillover from the boardroom to the High Court. So recently we have also discussed about this news that Invesco was asking to hold the extraordinary AGM, and for that NCLT has given the verdict, and according to that Zeal has to ensure for extraordinary meeting on last Thursday, I suppose. But as per the current news, this particular battle, this particular dispute between the Invesco and Zeal is not going to resolve soon, and Zeal is actually thinking to
take the Invesco to the Supreme Court or the High Court. So Zeal announced on Saturday that it moved to Bombay High Court against Invesco for seeking an extraordinary general meeting of shareholders for removing managing directors MD and chief executive officers and appointing 6 of its nominee as a director. And Zeal has rejected this particular plea or this particular suggestion by Invesco, and that's what Invesco requested for EGM after this particular rejection. तो फिलहाल जो इन्वेस्को और जील यानी जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है दैट इज गोइंग टू बी प्रोलॉन्ग्ड एज पर द करंट स्टेटस. नाउ लेट अस लुक द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज जाइडस कैडिला वांट ₹1,900 फॉर 3 डोज कोविड वैक्सीन. तो गवर्नमेंट जो है वो जाइडस कैडिला से नेगोशिएशन पे है. 3 राउंड नेगोशिएशन के हो चुके हैं जिसमें जाइडस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2,000 मांग रही है 3 डोजेस के लिए. किसके लिए? जो कि 12 साल से ऊपर के बच्चों को लगाई जाएगी. बट गवर्नमेंट वांट द जाइडस टू डिक्रीज द प्राइस. बेसिकली जाइडस कैडिला इज प्रोवाइडिंग द वैक्सीनेशन शॉट दैट इज सिरिंज फ्री, निडल फ्री, और जिसमें 3 डोजेज होंगी जो 12 प्लस जो इंडिविजुअल्स हैं उनको एडमिनिस्टर करी जाएगी अगेंस्ट कोविड. तो उसके लिए कई सारे राउंड ऑफ नेगोशिएशन हो रहे हैं जिसमें जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो 2,000 का जो कैप लगा रखा है, 2,000 मतलब 1,900 रुपये का जो कैप लगा रखा है जाइडस ने, उसको थोड़ा सा रिमूव कर दिया जाए. इज़ वेरी हाई कॉस्ट फॉर 3 डोज जैप. तो गवर्नमेंट जो है वो प्राइस नेगोशिएट कर रही है एंड इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट फाइनल डिसीजन विल बी टेकन इनटू दिस मंथ. लेट अस सी जो चिल्ड्रन के लिए जो जाइडस कैडिला की वैक्सीन आ रही है वो कितने रेट पर अवेलेबल होगी. हाउएवर गवर्नमेंट वांट्स टू मेक इट अफोर्डेबल. नाउ लेट अस लुक इनटू द नेक्स्ट क्लिप. डिजिटल हेल्थ मिशन इज इन अ क्लिक नॉट येट. तो रिसेंटली आयुष्मान भारत के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल मिशन की स्कीम लाई थी इन ऑर्डर टू लिंक ऑल द हॉस्पिटल्स, ऑल द मेडिकल सेंटर प्रोवाइडेड इनटू वन डेटाबेस एंड द स्टोरेज ऑफ मेडिकल हिस्ट्री और मेडिकल treatment of patients and issuing them one number through which they can access their medical history and medical data anywhere in the country. तो उस पर्टिकुलर मिशन को लेकर के फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं. अभी फिलहाल वो डिजिटल हेल्थ मिशन इज़ नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंटेड. वाई? वन ऑफ द मेजर रीजन इज़ द डेटा प्रिवेसी. क्योंकि डेटा प्रिवेसी को लेकर के, डेटा शेयरिंग को लेकर के, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है. सो दीज टाइप्स ऑफ डेटा शेयरिंग कंसर्न, डेटा स्टोरेज कंसर्न, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर कंसर्न में block this particular digital health mission under Ayushman Bharat scheme. And as per the expert, this is a very prominent challenge and this particular challenge is multi-fold. बहुत सारी की डेटा कहाँ स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा, कौन एक्सेस कर सकता है, कौन डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करेगा, डेटा एक्सेस करने की क्या कंडीशंस रहेंगी, डेटा सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जाए, कितना डेटा कंपनीज या हॉस्पिटल्स या देख पाएंगे कहीं कंपनीज कंज्यूमर्स के डेटा का मिसयूज ना करें. लॉट ऑफ इशूज आर देयर एंड बिकॉज ऑफ दीज इशूज डिजिटल हेल्थ मिशन इज स्टिल not going to be implemented soon. So this is all about today's news. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.